नंदिया सत्परी नवर भारती statements may mind anger O Narada Vrisha unto Upalakshyadi prove to be na never by certainly Kochit at any time may mind Manasa Atmai Vrisha unto Kadi progress na nar me mind Rishikani senses Padanti degrades Asatpadi in temporary matter yet because me mind Hृदा At Atantyaku Arda by great earnestness Trita caught hold of Hari, the Supreme Personality of Godhead. You can read in the translation. क्योंकि मैंने बड़े उत्साह से भगवान हरि के चरण कमलों को पकड़ लिया है, इसलिए मैं जो भी कहता हूँ वह कभी भी झूठा साबित नहीं होता। नहीं मेरे मन की प्रगति कभी रुकी है, न ही मेरी इंद्रिय पदार्थ के प्रति अस्थायी आसक्ति से कभी क्षीण। तात्पर्य भगवान ब्रह्मा नारद के लिए वैदिक ज्ञान की मूल वक्ता और नारद व्यासदेव और अन्य जैसे अपने विभिन्न शिष्यों के माध्यम से पूरी दुनिया में पारलौकिक ज्ञान के वितरक। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा जी की तत्वों के सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं और इस प्रकार पारलौकिक ज्ञान सृष्टि के आरंभ से ही अनादि काल से शिष्य उत्तराधिकार की प्रक्रिया द्वारा पूरे विश्व में वितरित किया जा रहा है। भगवान ब्रह्मा भौतिक संसार के भीतर उत्तम उत्तम जीवित प्राणी और पारलौकिक ज्ञान के किसी भी ईमानदार छात्र को ब्रह्मा जी के शब्दों और वचनों को अचूक मानना चाहिए। वैदिक ज्ञान अचूक है क्योंकि यह सीधे भगवान से ब्रह्मा के हृदय तक जाता है और चूंकि वह सबसे परिपूर्ण जीवित प्राणी थे, ब्रह्मा जी हमेशा अक्षरशः सही होते थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान ब्रह्मा जिन्होंने ईमानदारी से भगवान के चरण कमलों को सर्वोच्च सत्य के रूप में स्वीकार किया। ब्रह्मा संहिता में जिसे ब्रह्मा जी ने संकलित किया है, उन्होंने सूत्र गोविंदम आदि पुरुष को दोहराया है। मैं आदि भगवान गोविंद आदि व्यक्तित्व का उपासक हूँ, इसीलिए वह जो भी कुछ कहते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं और अपना मनोदशा में सामान्य रूप से जो कुछ भी करते हैं, आदि भगवान गोविंद के साथ उनके सीधे और बहुत घनिष्ठ संबंध के कारण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेमपूर्ण दिव्य सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों के शब्दों और कार्यों को सभी सुरक्षा देते। भगवान भगवद गीता 9वां अध्याय 31वां श्लोक में घोषणा करते हैं, कहते हैं प्रतिजाति हे कुंती पुत्र कृपया इसकी घोषणा करें। घोषणा करें। भगवान अर्जुन से घोषणा करने के लिए कहते हैं, और क्यों? क्योंकि कभी कभी गोविंद का ऐलान सांसारिक प्राणियों को स्वयं विरोधाभासी लग सकता है।
लेकिन सांसारिक प्राणियों को भगवान के भक्तों के शब्दों में कभी कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा। भक्तों की विशेष रूप से भगवान द्वारा रक्षा की जाती है ताकि वे अचूक बने रहे। इसलिए भक्ति सेवा की प्रक्रिया हमेशा उस भक्त की सेवा में शुरू होती है जो शिष्य उत्तराधिकार में। भक्त हमेशा मुक्त होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे निर्विशेष है। भगवान शाश्वत रूप में एक व्यक्ति है और भगवान का भक्त शाश्वत रूप में एक व्यक्ति है, क्योंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त के पास अपनी इंद्रियां होती है, इसीलिए वह हमेशा एक व्यक्ति होता है। और क्योंकि भक्त की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण पारंपरिकता से स्वीकार की जाती है, भगवान की अपने पूर्ण आध्यात्मिक अवतार में एक व्यक्ति है। भगवान की सेवा में रहने वाले भक्त की इंद्रियां झूठे भौतिक भोग के आकर्षण में कभी नहीं, भक्ति की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, और यह सब भगवान की सेवा के प्रति भक्त के वफादार लगाव के कारण होता है। यही पूर्णता एवं मुक्ति का मानक है। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक कोई भी व्यक्ति परम भगवान श्री कृष्ण और आदि भगवान के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण तुरंत मुक्ति के मार्ग पर आ जाता है। भगवत गीता 14वां अध्याय 26वां श्लोक में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, मां चो योग विचारे भक्ति योगे पदे सर्वनाम समतीता उपध्याय विद्यते। इसलिए जो कोई भी प्रेम पूर्ण सेवा के संबंध में भगवान के व्यक्तित्व के साथ गहरे संपर्क में रहने के बारे में दिल और आत्मा से गंभीर है, वह शब्द और कार्यों में हमेशा जुट रहेगा। इसका कारण यह है कि सर्वोच्च भगवान पूर्ण सत्य है और पूर्ण सत्य के साथ ईमानदारी से कोई भी चीज उसकी पारलौकिक गुणवत्ता को प्राप्त। दूसरी ओर पूर्ण सत्य के साथ किसी भी वास्तविक संपर्क के बिना भौतिक विज्ञान और ज्ञान किसी भी मात्रा में मानसिक अटकलें केवल पूर्ण सत्य के संपर्क में न होने के कारण एक सांसारिक असत्य और मिथ्या होना है। जैसे ईश्वर विहीन विश्वास और कार्य एक ही भौतिक रूप से कितने भी समृद्ध क्यों न हो, कभी भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। यही इस महत्वपूर्ण श्लोक का तात्पर्य है। भक्ति का एक कण अविश्वास से अधिक मूल्यवान है। नमो सुपदाय कृष्णसाय बोले समदे भक्ति वेदांत स्वामी जनाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के सुबह के कथा में। आज के हमारे माननीय जो स्पीकर है, वक्ता है, वो है हिज ग्रेस शंखधारी प्रभु। प्रभु जी परम पूज्य के शिष्य है और उन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड में सबसे जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन रहते हैं जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईएससी बैंगलोर से 1984 में उन्होंने कंट्रोल सिस्टम में अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है। और प्रभु जी उसके बाद जो मंगलयान चंद्रयान बोलते हैं, वो जो गवर्नमेंट कंपनी इसरो बोलते हैं जिसे, उसमें प्रभु जी साइंटिस्ट है प्लस डीआरडी मतलब हमारा जो डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडी को डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रभु जी ने सेवा दी हुई है। उसके बाद प्रभु जी आईबीएम में सेवा दी है, ईटीएनटी करके एक कंपनी है उसमें प्रभु जी ने भी सेवा की है। वो ऑडिट करते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट में। 1990 में उन्होंने श्रील प्रभुपाद के बारे में जीवनी पढ़ी और श्रील प्रभुपाद की पुस्तक और उनके जीवन से प्रभु जी बहुत आकर्षित हुए और उन्होंने इसको ज्वाइन किया। स्पेशली प्रभु जी ने सबसे ज्यादा जो प्रचार किया है वो यूथ के लिए किया है। बहुत सारे क्लासेस उन्होंने दिए जैसे योगा सिस्टम, माइंड कंट्रोल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज
और ये प्रभु जी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। मदुरई जो यूनिवर्सिटी है, तो प्रभु जी के रिकमेंडेशन और एफर्ट्स की वजह से श्रील प्रभुपाद की जो दो पुस्तक है, परफेक्शन ऑफ योगा एंड साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, तो देख लीजिए क्या है इसमें। वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एज अ कोर्स है, करिकुलम है। प्रभु जी ने 1997 से 2000 तक 200 से ज्यादा कैंप किए हैं, क्लासेस किए, और 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 20 इंस्टीट्यूट में से 6000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है इससे बेनिफिट ले चुके हैं। प्रभु जी ने अपने जीवन काल में दो मंदिरों का निर्माण किया है, एक मदुरई में और एक तिरुवनंतपुरम में किया है। वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट सेवा करते हैं। उन्होंने 20 एकड़ का पेरियाकुलम, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पेरियाकुलम जगह पे 20 एकड़ का एक लैंड लेके वहाँ पे योगा आश्रम करके स्टार्ट किया हुआ है, ये तमिलनाडु में। प्रभु जी जो है वो ऑल इंडिया की जो इस्कॉन ब्यूरो जो अपना मैनेजमेंट बॉडी है, उसके लिए पूरे भारत के जनरल सेक्रेटरी है, प्लस सदर्न तमिलनाडु के लिए वो जनरल सेक्रेटरी है, और इसका वृंदावन का अपना जो टेम्पल है उसके लिए वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बहुत सारी सेवाएं प्रभु जी ने यहाँ पे की हुई है। प्लस वो तमिलनाडु, तमिल लैंग्वेज में मंथली मैगजीन प्रभु जी ये करते हैं, पब्लिश करते हैं, जिसका नाम है कृष्णा अमृत, कृष्णा अमृत, ओके। तो बहुत सारे सेवाएं प्रभु जी करते हैं, 30-40 साल से प्रभु जी कार्यरत है पूरे ईश्वर। तो हमें सही में बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जी देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से सभी क्वालिफाइड है, प्लस स्पिरिचुअल दृष्टि से उनकी इतनी सेवा की हुई है। हमारा बहुत सौभाग्य है, आज सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे साथ में आज के साथ भगवत कथा करेंगे हमारे लिए। तो हम सभी इस ग्रेट शंखधारी प्रभु का स्वागत करेंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जो मेरी सिस्टर है जी, मेरी वो सब प्रॉब्लम है, Hare, Hare Krishna, thank you very much. First of all, thank all the devotees, in particular, Mayapurvasi Prabhu, for giving me an opportunity to associate with all of you. And it is very nice to be along with you. Now, up to what time class? 9 o'clock. I'll take around 30 minutes or 35 minutes, and I prefer a lot of questions. Thank you very much. Now, the slogan is Brahma is talking to Narada. And main important thing is whatever a devotee tells will be truth. So, main important thing is Satya. Satya. Truth, it will be truth. Yes, it. Because the devotee with a great zeal means very interestingly is holding the feet of the Lord. That is why that all will not be false, nor the Brahma bodies will not be false. And also second point is the devotee mind, progress of the mind will never be deferred, deterred. It will not deviate.
मन की जो प्रगति रहती है वो कभी भी रुकती नहीं है, वो चलती है। Because when you are holding the feet of the Lord, his mind will not deviate. क्योंकि भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखा है, इसलिए ये मन कभी भी एक मार्ग से हटेगा नहीं। In one more word, Brahma is telling, his senses will be never degraded, but attracted by temporary matters. ब्रह्मा जी और एक चीज बता रहे हैं कि इसी वजह से वो कभी भी भौतिक दुनिया की अशाश्वत चीजें हैं जो उनको आकर्षित। The word is telling asat pade, temporary matter. तो वहां भी शब्द आता है असत पद। Therefore, when you are catching hold of the feet of the Lord, Hari, first thing is all you tell will be truth. तो क्योंकि भगवान के चरण कमलों को एकदम पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए जो भी कुछ है वो असत्य नहीं होगा, वो हमेशा सत्य रहेगा। Second is your mind will never deviate. और दूसरी चीज है कि हमारा मन कभी भी भटकेगा नहीं। Third, you will not be attracted by asat pade, temporary matter. तो तीसरी चीज है कि असत पद जो भी टेम्पररी अशाश्वत चीज है उससे हम कभी भी आकर्षित। Because they are holding the feet of the Lord Hari. क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों को। Because when you are touching the Hari, how can you tell lies? How can your mind deviate? How can you be attracted by other things? तो भगवान के चरण कमलों को हमने स्पर्श किया है, तो हम लोग कैसे किसी दूसरी चीज से आकर्षित हो सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं या हमारे मन कहीं पे इधर उधर जा सकते हैं। But now you can ask a question. How will I catch the feet of the Lord? तो अभी हम प्रश्न पूछेंगे कि भाई हम भगवान के चरण कमलों को कैसे पकड़ें? Where is he? कहाँ पे है वो? How can I see him? हम उनको कैसे देख सकते? How can I catch his leg? हम उनके चरण कमलों को कैसे पकड़ सकते? This answer the question is no. Brahma easily told catch hold of the leg, but how to catch hold of the leg? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भाई मैं चरण कमलों को पकड़ लेंगे, कैसे पकड़ सकते हैं? This process is very simple. और जो उसकी प्रक्रिया है वो बहुत साधारण और Because it's very easy to catch him. How do you catch him? तो भगवान को पकड़ना, उनके चरण कमलों को पकड़ना बहुत ही सिंपल है। How? कैसे? By calling him. उनका उनको कॉल करें, उनको बुला। How a child is calling the mother. जिस तरीके से बच्चा अपनी माँ को बुलाता है, Similarly, we got to call the Lord by his name. वैसे ही भगवान को भी हमें उनके नाम से पुकारना चाहिए। Very simple. We are doing Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. By calling his name, he is coming. तो उनके नाम को हम पुकारेंगे तो भगवान अपने आप आएंगे। He is more loving us than a mother. वो माँ से भी ज्यादा प्रेम करने वाले हैं। And it's a very easy process. और ये बहुत साधारण और सिंपल सा। But your mood is very important. लेकिन हमारा जो मूड है वो सबसे पहले। Like Prabhupada tells, like a child is crying for the mother when it is separated. We also tell this mantra by crying, calling Lord. जैसे कि छोटा बच्चा अपनी माँ के माँ को रो रो के पुकारता है, वैसे ही भगवान को भी रो रो के पुकार के पुकारना चाहिए। Therefore, the process by that we are trying to catch hold of the Lord. But still we are not caught the Lord. Catch the Lord. तो इसीलिए प्रोसेस साधारण से हम एक भी छुट्टी है, लेकिन हम उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भगवान को पकड़। Because sometimes we are deviated. क्योंकि कुछ कुछ टाइम हम डेविएट होते हैं, We are unable to catch hold of Him fully. हम वो भगवान के लोटस फीट को कंप्लीटली कैच नहीं कर। Therefore, we are unable to achieve all these three. इसलिए ये जो भी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इन चीजों को प्राप्त नहीं। Because we are unable to, whatever we tell is not becoming true, and also our mind is deterred, and also we are getting attachment to material things. और इसी वजह से हम जो बोलते हैं वो सत्य ही होता है, ऐसा नहीं है, हमारा मन भी भटकता है और हम भौतिक चीजों की आकर्षित। The process is very simple, but at the same time, it is in our mood, humble mood, and other things, the association of devotees, we have to execute these.
तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसमें स्पेशली भक्तों एसोसिएशन की आता है। Now, when you are perfectly worshipping, catching on our Lord, all words will come God's word. तो अगर हम भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखते हैं, जो भी शब्द हमारे मुंह से आएंगे वो भगवान के ही शब्द आएंगे। Now the Lord is always sitting with in our heart. भगवान हमेशा अपने हृदय में स्थित है। How is he sitting? वो कैसे रहेगा? In what form is sitting in our heart? कौन से फॉर्म में, रूप में वो वहाँ पे Paramatma. परमात्मा, He is sitting as Paramatma. वो परमात्मा के रूप में हमें हृदय में, And he is giving instruction also. और वो हमें सूचनाएं भी देते हैं। Now Shvedaswara Upanishad talks about two birds in a tree. श्वेताश्वत उपनिषद में दिया गया है कि दो पंछी जो है वो हमेशा पेड़ पे बैठे हैं। Our body is the tree. हमारा शरीर वो पेड़ है। Who are the two birds? Which are the two birds sitting in this tree? और वो दो पंछी कौन है? Paramatma and Jivatma. Paramatma is Lord's Amsa. परमात्मा जो है वो भगवान के अंश रूप है। Jivatma is Lord's Binna Amsa. तो जो जीवात्मा है वो भगवान का भिन्न अंश, Separated. जो सेपरेट है। Paramatma is a direct energy. परमात्मा जो है वो भगवान के डायरेक्ट अंश। This Paramatma will not be covered by anything. ये जो परमात्मा है वो किसी चीज से कवर नहीं है। But Jivatma will be covered. लेकिन जीवात्मा जो होता है वो हमेशा पूरा आवृत है। Just as the two birds, one bird is eating sometimes fruits, sometimes bitter things. तो जो एक पंछी है वो हमेशा वहां की फल खाता है, कभी वो मीठे रहेंगे, कभी वो खट्टे रहेंगे। Sometimes the Jivatma is suffering with trouble. Sometimes the Jivatma is happy with something. कभी जीवात्मा बहुत खुश होगा या कभी कभी बहुत परेशान। This is on the material platform. ये सब कुछ भौतिक स्तर पर होता है। But other birds sitting on the top of the tree, which is the one Paramatma. और लेकिन जो पंछी वो पेड़ के सबसे शीर्ष भाग पे रहता है, It neither becomes happy nor becomes sad. ना वो खुश होते हैं ना वो दुखी होते हैं। But it is not affected. But seeing this other bird is Jivatma is suffering, that bird is trying to instruct. तो जो नीचे बैठे हुए पंछी जीवात्मा है उसका जब वो दुख देखते हैं तब वो उसको, But still the instruction is Jivatma not listening. लेकिन ये सोचने के बाद ये जीवात्मा उसको सुनता है। And other bird is instructing, but this Jivatma, the Paramatma is instructing, Jivatma is not listening. परमात्मा हम लोगों को सूचना देते हैं लेकिन जीवात्मा उसको सुनता है, Therefore it is suffering. इसीलिए वो सफर करता है। But as a Sugrudam Sarva Bodhana, that Paramatma is Sugruda. लेकिन परमात्मा है वो सुविधा में He is a friend. वो दोस्त है And he never leaves this friend. और वो हमें कभी नहीं छोड़ता। The Jivatma next birth goes to a worm, also it goes to a worm. जीवात्मा जब एक कीड़े के रूप में भी चला जाता है फिर भी परमात्मा उसे छोड़ता है। Paramatma also goes there as a worm, in the worm body. परमात्मा भी उस कीड़े के बॉडी में चला जाता है। What a merciful Paramatma is. वो कितने कृपालु है, हम समझ सकते हैं। Our friends will they come with us when they die? हमारे दोस्त हमारे साथ कीड़े के रूप में आ सकते हैं, But this friend will always come with us. ये मित्र हमेशा आए And he always help us. और वो हमेशा हमारी मदद करेगा And he always wait for us to listen. और वो हमेशा वेट करते हैं, इंतजार करते हैं हमारी सूचना सुनने। That is the beauty of this Paramatma. तो ये सबसे बड़ी सुंदरता है परमात्मा। And once you understand his instruction, then it's wonderful. और जब हम सुनना चालू करेंगे, समझना चालू करेंगे उनकी सूचनाओं को, तब सबसे बड़ा अच्छा लगेगा। This is like our mind, our hearing power and the Lord's telling power, we need to tune. तो हमारा सुनने का शक्ति और भगवान का बोलने का शक्ति को एक साथ ट्यून करना चाहिए। This is the devotional process. इसको बोलते हैं भक्ति योग। For example, I remember those days, olden days, that radio. तो प्रभु जी पुराने जमाने का रेडियो जो याद Valve radio, that valve.
that there will be walls inside. But the sound used to be very clear, wall. तो पुराने जमाने का जो रेडियो था वो तंत्रज्ञान की दृष्टि से And there will be a meter that you go to turn, tune the frequency. तो उसमें ट्यून को फ्रीक्वेंसी को मैच करना And radio station transmit in particular frequency. एंड रेडियो स्टेशन जो रहता था एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वो सिग्नल्स देता था That is transmitter. तो वो छोड़ता था सिग्नल्स And in a radio there is a receiver. एंड रेडियो के अंदर एक रिसीवर रहता था That receiver is in different frequency. तो वो जो रिसीवर है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी Nothing you hear it. तो ऐसा रहता था तो कुछ नहीं मिलेगा Therefore, what you do is to tune the frequency. इसीलिए हम लोगों का मन रेडियो They are transferring 91 point megahertz. You also put 91 point megahertz. वो अगर 91 मेगाहर्ट्ज में कर रहे हैं तो हमें भी अपना रेडियो 91 में करना Until that you don't hear it. अदरवाइज हमको कुछ सुनाई नहीं And sometimes it makes big noise also. कुछ कभी-कभी वो बहुत चिल्लाता And there will be another small switch for fine tuning. Even you may come across 91, but that frequency is 91.2 means you go to 2, slowly you do. उस रेडियो में बड़े स्विच के साथ एक छोटा भी रहता था तो फाइन ट्यूनिंग के लिए रहता था तो उसको भी घुमा के अगर हम फाइन ट्यूनिंग करते तो अच्छा It's a big technical process. You should fine tune. Excellent, you can hear it. तो ये तंत्रज्ञान की दृष्टि से बहुत कठिन ऐसी प्रक्रिया रहती थी करते थे तो बहुत अच्छा साउंड आता था Now our frequency also, Lord is transmitting in the lot of message. तो भगवान भी जो है वो हमें बहुत सारे मैसेजेस ट्रांसफर कर रहे होते रेडियो स्टेशन But he is transmitting in different domain. लेकिन वो दूसरे डोमेन में दूसरे फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर कर What domain is transmitting? कौन से डोमेन में वो दे रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को Spiritual domain. स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से वो भेज रहे हैं But we are in the material domain. लेकिन हम जो है वो भौतिक दृष्टि में And these waves are short waves out the long waves. That long frequency, short frequency, that are not. सो वो जो है भगवान का लॉन्ग फ्रीक्वेंसी तो हम लोग को ट्यून करना FMs are short frequency. एफएम जो है वो सॉफ्ट FM waves are short frequency, but very pakka clear. तो एफएम जो है वो बहुत सॉफ्ट फ्रीक्वेंसी रहता है लेकिन बहुत क्लियर रहती है But AM, that what is that audio frequency? That is very long distance it goes, but it's not perfect. जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रहता है वो हमेशा बहुत दूर तक जाता है Therefore, we need to tune our domain to spiritual domain. तो हमारा जो भौतिक दृष्टि का डोमेन है वो हमें स्पिरिचुअल डोमेन के साथ ट्यून करना पड़ेगा Then we can listen what is telling. तो उसके बाद हम समझ सकते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं। Now we are all tuning with our cell phone, everything, and all those in material domain. तो अभी आप जो अपना फ्रीक्वेंसी ट्यून कर रहे हो अपने सेल फोन के साथ और भौतिक चीजों के साथ That will not catch that spiritual domain message. वो सब चीजें भगवान की फ्रीक्वेंसी कैच करती हैं Can your cell phone catch spiritual domain? No. क्या हमारा मोबाइल फोन उसको ट्यून को भगवान की ट्यून को कैच कर पाएगा Forget about all these things. Without any cell phone, you can catch the Krishna. तो बिना किसी भी सेल फोन के भी हम भगवान के ट्यून को कैच कर सकते For example, you might have heard about telepathy. हैं Telepathy. Have you heard about telepathy? इसे टेलीपैथी के बारे में सुना Telepathy means just you might say, oh, just now I thought of calling you. You are calling me. तो टेलीपैथी मतलब क्या होता है कि किसी का फोन आता है कोई बोलता है तो अरे मैं आपके बारे में अभी सोच रहा था और आपने Many times it happens in our life. How the communication went? तो कैसे ये कम्युनिकेशन संपर्क कैसे हुआ There is no satellite. वहाँ सैटेलाइट नहीं है We didn't use the satellite. कोई भी सैटेलाइट We didn't use the cell phone. हमने सेल फोन नहीं We didn't use the normal wire phone. हमने वायर फोन नहीं We didn't call through our mouth. हमने अपने से उनको बोला भी नहीं करा How our message went in? तो वहाँ पे हमारा मैसेज संदेश कैसे पहुंचा Who transmitted that? किसने उसको वहाँ पे ट्रांसफर किया Who is the person who is transmitting? कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस पिक्चर से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करे Because Lord is sitting in everyone's heart. क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में He is the overall transmitter. तो वो ओवरऑल वो ट्रांसफर Because he has an antenna in everybody's heart. क्योंकि भगवान का एंटेना जो है हर एक के हृदय में Because everybody's heart is keeping one antenna is there. तो हर एक के हृदय में वो एक एंटेना रखते हैं Therefore, the moment you think of that, then that person is catching. तो इसीलिए हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उस व्यक्ति को तुरंत वो पता
चले जाता है। Because Paramatma in this heart is communicating to Paramatma in his heart. क्योंकि हमारे हृदय में जो स्थित परमात्मा है वो उसके हृदय में स्थित परमात्मा को कम्युनिकेट करता है। It will not happen always. ऐसा हमेशा नहीं होगा। Because you are so much fond of that person or thinking of that person, Paramatma is mercifully communicating. क्योंकि वो हम उस व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए परमात्मा हमारे हृदय से वहां। Similarly, Brahma also is telling the Lord is, when he catch hold full-heartedly, Lord, he communicates everything to you. तो इसलिए ब्रह्मा जी फुल अपने सारे डिवोशन के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान वो जो उनका मैसेज है, संदेश है, उसको ब्रह्मा जी देते हैं। And when it comes from Lord, how can it be false? और जब वो भगवान से आता है तो वो कभी असत्य कैसे हो सकता है? And you can, as it is, you can, Lord, you can get from that without any contamination. तो किसी भी दूषित चीज से दूषित हुए बिना वो मैसेज संदेश देते हैं। Because you go so much by calling this mantra, Hare Krishna mantra, you are tuning with it. तो हम भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र से इतना बुलाते हैं, तो हम ट्यून करते हैं And your both frequencies are synchronized. तो हम दोनों के भी जो फ्रीक्वेंसीज है वो एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। You say na sync, you want to sync that phone and all that synchronize. जैसे हमारा फोन हमें सिंक करना पड़ता है। See, everything has spiritual meaning also. Synchronize. हर एक चीज का एक आध्यात्मिक मतलब भी होता है, सिंक्रोनाइजेशन। But when we do satellite syncing, we go to control the satellite, means we got to sync the satellite. तो हम सैटेलाइट जो है ऊपर का उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके साथ हम सिंक्रोनाइजेशन। But that is still material. लेकिन वो फिर भी भौतिक है। But that is in material domain transmission और happens. वो भौतिक स्तर पे होता है। That needs a satellite, that needs a communication channel, transmitter, receiver, media, everything needed for communicating from. तो कहीं भी कोई भी संपर्क करना होता है तो उसके लिए सैटेलाइट चाहिए होती है, ट्रांसमीटर चाहिए होता है, रिसीवर चाहिए होता है, ये सब चीजें जरूरी होती है। But in the spiritual domain, you don't need anything. लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, Because in everyone's heart there is a perfect transmitter and receiver. तो हर एक के हृदय में एक बराबर से ट्रांसमीटर और एक बराबर से रिसीवर रखा होता And Bhagavan as Paramatma. है, वो जो है परमात्मा। And it's a very simple transmission. और वो बहुत ही साधारण सिंपल सा ट्रांसमिशन। Therefore, this is the way Brahma is telling. Because I am catching hold, I am perfectly synchronized to my frequency. Now I am perfectly hearing. It not be false. It's a word from Lord. तो मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज किया है फ्रीक्वेंसी के साथ, इसलिए भगवान के संदेश में सुन पा रहा हूँ और वो कभी भी असत्य नहीं। And all others are byproducts. और बाकी का सारा एक बाय प्रोडक्ट। When you are catching the Lord's lotus feet, how can you become what is attracted by other things? जब हम भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखेंगे तो कोई भी भौतिक चीज से आप कैसे आकर्षित? Krishna guarantees in Bhagavad Gita, Paramtushva nivattade. तो भगवान हमेशा गारंटी देते हैं परम दृष्टवा निबर्ध। When you get a higher taste, how will you get lower taste? जब भी हमें कोई उच्च स्तर का स्वाद मिल जाता है तो नीचे का स्वाद जो होता है अपने आप And everything will be concentrated. एंड सब भगवान के प्रति कॉन्सेंट्रेट। And this is a simple process. और ये बहुत साधारण सा प्रक्रिया है। And the chanting is so scientific. और ये सब कुछ वैज्ञानिक है। I remember when first day devotee they told chanting. I told, what is this? Like a memory poem, school memory poem. तो प्रभु जी को बहुत अच्छे से पता चला कि पहली बार चैंटिंग करके बोला तो देखिए क्या बच्चों वाली प्रार्थना। Because I was thinking it is like a material form. What is that thing? Repeatedly Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram. Somebody has to convince me 3 months to chant. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो उनको थोड़ा सा भौतिक लगा कि क्या बार-बार वही मंत्र बोल रहे हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं कि मुझे जपा चालू करने के लिए 3 महीना लगा। But somewhat on devotee he was explaining me how scientific in a lecture I heard. तो लेकिन वो जो भक्त It's around 89 or something like that. जो भक्त उनको प्रिजाइड कर रहे थे 89 में वो रिपीटेटिव बताते रहते थे कि कैसे जपा करना। Because our materially contaminated mind, everything wants material scientific. और हमारा मन जो है वो भौतिक से इतना आसक्त रहता है कि हमें सब कुछ साइंटिफिक लॉजिकली चाहिए। And he was talking about which one you like, radio or TV. तो वो उनको पूछ रहे थे कि आपको क्या पसंद है?
Which is more powerful? कौन सा पावरफुल है सबसे ज्यादा? Why? Audio visual, you can hear and see, but radio only hearing. तो सबसे ज्यादा पावरफुल टीवी है, क्योंकि रेडियो में आपके बस केवल सुन सकते हैं, लेकिन टीवी में आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। Therefore, when two senses are involved, your mind is more involved. तो इसीलिए हमारे दो इंद्रिय अगर किसी चीज पे लगती है, तो वो हमारा पूरा मन वहां पे लगेगा। You cannot involve five senses in that process. तो हम कभी भी पांचों की पांचों इंद्रियां किसी चीज में लगाने की, But still we are more attracted. लेकिन फिर भी हम बहुत आकर्षित होते हैं। It is material still. लेकिन ये भौतिक है, You get bored. हम बोर हो जाते हैं। You go and see anybody is having the TV, they will go on changing the channel तो हम कभी देखते नहीं है कि कोई भी व्यक्ति टीवी का चैनल चेंज करते जाता है, because it's getting bored. क्योंकि वो बोर हो जाते हैं। The taste is not higher taste. क्योंकि वो जो उनको टेस्ट मिल रहा है वो उच्चतम वाली है। But here, the same process in chanting, when you are telling Hare Krishna Mahamantra, your mouth is telling. जब भी हम यहाँ पे जपा करते हैं, तो हमारा जो मुख है वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, Your ear is hearing. हमारे कान जो होते हैं वो सुनते हैं। Your touching senses, your beads, tulasi beads you are touching. हम अपने त्वचा से हम बीड्स को अपने उंगलियों से टच कर रहे हैं, And you are having darshan of the Lord. और हम भगवान देख रहे हैं, Your eyes are seeing. हमारे आंखें देख रही हैं। This is a garland offered to Lord. The smell is coming. ये हार भगवान को अर्पित किया हुआ है, उसका fragrance आ रहा है। Therefore, Sravanam, my ear is engaged. On the Kirtanam, my mouth is talking. On the Sparsanam, I'm touching the beads. On the Darshanam, I'm seeing the Lord. And this Smarana, this what is Granam, smelling. All five senses involved in one object in chanting. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि जैसे श्रवणम में मेरा कान इंगेज है, फिर उसके बाद स्पर्शनम में मेरा हाथ इसको टच कर रहा है, फिर उसके बाद श्रवणम में सुन रहा हूँ, और ग्रहण मतलब मैं सूंघ रहा हूँ भगवान का। मेरे पांचों के पांचों जो इंद्रियां है भगवान की सेवा में कार्यरत है। And they are completely controlled, all the five in one. और जो पांचों के पांचों इंद्रियां केवल एक ही व्यक्ति कंट्रोल में, And there is no way the mind can escape. इसकी वजह से मन जो है कहीं भी भाग नहीं सकता है। And also, this all the five are highest taste. और ये जो भी पांच हमें टेस्ट मिल रही है वो सबसे उच्चतम On the Lord. और Bhagavan. Therefore, our mind is perfectly controlled, like catching. This is the catching. इसलिए हमारा मन जो है पूरी तरीके से नियंत्रित। You chant like this, then your chanting will be perfect. और इस तरीके से अगर हम जप करते हैं तो हमारे जप पूर्ण परिपूर्ण है। Therefore, if we Sravanam Kirtanam Vishnu, then Smaranam automatically comes. तो अगर हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु करते हैं तो स्मरणम अपने आप आता है। You can remember, your mind is controlled. It goes to Lord. तो भगवान का चिंतन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है वो उसमें लगा है। This is the word how to catch. This is the way how to catch the Lord's feet. ये प्रक्रिया है कि भगवान के चरण कमलों को कैसे पकड़ के रखें। But we are not chanting like this. लेकिन हम ऐसे जप नहीं करते। Our chanting is not so much on that spiritual domain. हमारा जो जप होता है वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं होता। And anybody you tell like this, they will accept students. All five senses you can control by this process. And also, this is the highest taste. तो इस तरीके से अगर हम किसी को स्पष्टीकरण देते हैं, किसी विद्यार्थी को पांचों के पांचों इंद्रिय उसमें लगी रहती है, तो वो मान जाएगा करके। और ये सबसे हाईएस्ट उच्चतम टेस्ट है। This don't need, this only for mental speculative people. Otherwise, you don't need. You just chant and be happy. जो बाहर के लोग हैं जो स्पेकुलेशन करते हैं, उनके लिए चीजें लगती है, लेकिन बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। Prabhupada wonderfully established the truth for hippies. He gave only chanting and prasadam. It worked. प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरीके से इवन हिप्पी लोगों के लिए भी ये जो सत्य है वो हमें दिया है। This way, not only this five, that tongue also you give prasadam.
तो हमारे जुम्मा के लिए भी प्रसाद दिया है You need to become perfect, everything perfect. और सब कुछ एकदम परफेक्ट You can perfectly catch the Lord. और हम बहुत परफेक्टली भगवान की शर्तों को पकड़ते हैं। And it's a very simple process. और ये बहुत आसान सा It's तरीका है। scientific. और ये वैज्ञानिक है। Is it not scientific? ये वैज्ञानिक It is scientific or no? है। Because all the senses you are able to concentrate and on a higher taste and very simple, by that process, your mind is controlled. तो पांचों के पांचों इंद्रिय लगी हुई है, बहुत साधारण सा प्रोसेस है और अपना मन भी वहां पे लग रहा है। तो ये सबसे उच्चतम भी है। Because everybody wants to control the mind. हर कोई अपने मन को नियंत्रित कर, But here we are not controlling the mind. पर यहाँ पे हम मन को नियंत्रित नहीं कर रहे, We are not controlling the senses. हम इंद्रियों को भी नियंत्रित नहीं कर But Prabhupada used the word in this purport, the dovetail. रहे। प्रभुपाद यहाँ पे एक शब्द This word I like, Prabhupada only uses this word, dovetail. प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है, डॉक्टर। Dovetail means transfer from the material platform to spiritual platform. तो डॉक्टर मतलब क्या कि भौतिक स्तर से आप आध्यात्मिक स्तर की तरफ जा रहे हैं। Now my eyes are seeing all nonsense. मेरे जो आंखें हैं वो सब कुछ नॉनसेंस देख रही हैं, Dovetail took seeing Lord Darshan. लेकिन उनको बदल के हमें भगवान को देखना चाहिए। You can see wonder there. तो हम वहाँ पे आश्चर्य देखेंगे। And how can you get taste for all other nonsense? तो वहाँ पे देखने के बाद फिर बाकी की नॉनसेंस चीजों को हमें कैसे Our process is not controlling. हमारा जो प्रक्रिया है वो नियंत्रण करना है। Our process is dovetailing. हमारा प्रोसेस डॉक्टर करना है। Change the taste. तो उसका स्वाद बदलना है। And we don't stop eating prasad. We don't stop. हम खाना बंद नहीं करते, We take prasadam, wonderful prasadam. प्रसाद लेते हैं। This is dovetailing. इसको बोलते हैं डॉक्टर। Eating process is dovetail. ईटिंग प्रोसेस मतलब खाने का प्रोसेस मतलब डॉक्टर। And similarly, we want to hear nice bhajan, हमें अच्छे भजन सुनना है, nice song we want to hear. हमें बहुत सारे गीत सुनना पसंद है गाने। Now we hear nice bhajans. लेकिन हम अभी क्या करते हैं I भजन। remember some 25, 30 years back, some cassette came with 1,008 tunes of Hare Krishna Mahamantra. तो कुछ सालों पहले प्रभु जी बोल रहे हैं कि लोग वो हजार गान हरे कृष्णा हजार टीम्स के साथ आए। Because people want to hear different way. तो क्योंकि लोगों को अलग-अलग तरीके से सुनना। Prabhupada sang for the rock music. प्रभुपाद ने रॉक म्यूजिक के लिए भी गाया है। Dovetailing. तो डॉक्टर भी किया है। That rock music was heavy. Your ears will go. Ears will go in the rock music. तो वो जो हमारे कार है उसकी तरफ आकर्षित है। But Prabhupada sang that Hare Krishna Mahamantra for the tune. लेकिन प्रभुपाद ने रॉक म्यूजिक के ऊपर हरे कृष्णा This is called a dovetail. इसको बोलते हैं डॉक्टर। And because in that process, they were taking Krishna consciousness in their own way. और उसी प्रक्रिया में बाकी जो जितने भी लोग वहां पे थे वो अपने तरीके से कृष्ण भक्ति को ले रहे। See how Prabhupada is merciful for us. He gave our process very easily the biggest scientific fact. He made it simple and given in a nutshell. तो प्रभुपाद ने इतने सुंदर तरीके से इतना शास्त्रीय और वैज्ञानिक जो प्रक्रिया है हम लोगों को इतने आसानी से दी हुई। This is for the people who doesn't have faith. They should know all these things. तो जो व्यक्ति को विश्वास नहीं है उसको ये सब कुछ जानना चाहिए। But when has faith on Lord and Hare Krishna Mahamantra, they continue chanting. और भगवान और हरिनाम पे अगर हमारा विश्वास है तो हम अपना जप जो है वो कंटिन्यू। And what is wrong in chanting? गलत क्या है जप? What difficulty is there? क्या कठिनाई है उसमें? You don't pay anything. कुछ भी देना नहीं हम लोगों को पैसा। You don't have any restriction. हमें कोई restrictions नहीं। And you are free to do anytime. हम कभी भी कर सकते हैं, फ्री है कभी भी कर। And you can do whatever you want, but you continue chanting. हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हमें जब जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। Therefore, this is the way how to catch Lord's lotus feet. ये प्रक्रिया भगवान की चरणों का Prabhupada taught us. प्रभुपाद ने हमें सिखाया। And let us follow. हम फॉलो करना चाहिए। And that way is easy process. I am telling, I was in 12 years in research and development.
प्रभु जी बोल रहे हैं कि बहुत सिंपल है, वो पिछले 12 साल से रिसर्च में है। But all these things cannot understand this process. लेकिन ये सब रिसर्च मिला के भी ये जो बुद्धि की प्रक्रिया है उसको समझ नहीं। And yena kena dena, some or other way you chant. ये ना कि प्रकरण है, हम लोगों को जप कर। And you chant, you find the benefit. एंड जप करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके क्या बेनिफिट। And when you, by doing that, you are catching the Lord. When you're catching the Lord feet, all the benefit comes. Your mind is controlled. You don't distracted by the other material things. What a benefit! और इस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद हम भगवान के चरणों को पकड़ सकते हैं और उसके बाद इसके इतने सारे बेनिफिट आएंगे, मन नहीं भटकेगा, हम भौतिक चीजों को त्याग करेंगे। If I have to talk about the glories of chanting, it's a big topic. We can tell days. हरिनाम के बारे में स्तुति करना चाहेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है। Only one thing I quickly tell, I remember in Adi Shankara life history. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जो है इनके जीवन में एक घटना हुई है। And Adi Shankara is, he is a Mayavada. आदि शंकराचार्य जो है वो मायावादी। He is from Shiva's incarnation. तो आदि शंकराचार्य शिव जी का अवतार है। But he has glorified Harinam so much. लेकिन वो हरिनाम के प्रति आकर In his life, there is an incident. उनके जीवन में एक घटना हुई। When he was very young, 5 years old boy, जब 5 साल his father lost. His father was lost. के फादर नहीं थे, And the mother and son only two. केवल माता और वो रहते थे And he wanted to take sannyas at the young age. और उनको संन्यास लेना था। Mother didn't agree. माँ ने उनकी परमिशन She was crying. तो वो रो रहे थे। You are the only son. If you go, what will I do? तो माँ बोल रही थी कि मेरा अकेला बेटा है, हो जाएगा तो क्या। And then one day they both of them went to river take bath. तो ये जो माता है और आदि शंकराचार्य दोनों नहा रहे थे। And when he was taking bath, that crocodile pulled him. और जैसे वो नदी पे नहा रहे थे, एक मगरमच्छ आके आदि शंकराचार्य को खींचने लगा। Mother was crying like anything. तो माँ जो है वो रोने लगी जोर-जोर से। Then he is telling, Adi Shankara is telling, you give me permission to take sannyas, then crocodile will eat. तो आदि शंकराचार्य अपनी माँ को बोले, अगर तू मुझे संन्यास लेने के लिए परमिशन दे दे, ये जो मगरमच्छ चला जाएगा। Then to save the son, say, okay, you take sannyas, he told. तो अपने बेटे को बचाने के लिए माँ बोले, हाँ ठीक है, मैं आपको परमिशन दे दूँ, आप संन्यास लीजिए। When crocodile left him, he came to shore. तो वो मगरमच्छ चला गया और आदि शंकराचार्य Then, but he made a request. और वो उन्होंने प्रार्थना की मत माने। At the end of my life, you should come and see me. बोले कि मैं जब शरीर छोड़ूंगी उस समय। And the second thing is, at the end, after my passed away, you should do my cremation. Cremation. अंतिम क्रिया। मैं जाने के बाद जो मेरा अंतिम संस्कार है वो भी तुम्हें करना है। He agreed. तो वो हाँ बोले आदि शंकराचार्य। But suppose sannyasi is not supposed to do अंतिम क्रिया. लेकिन सन्यासी जो रहते हैं ना, उन्होंने कभी अंतिम क्रिया नहीं करना। Yes. Therefore, then he went off north. इसीलिए वो आदि शंकराचार्य उत्तर। Mother was in Kerala, Kaladi. In Kerala. उनकी माँ जो थी वो केरला में। Kaladi, that place is Kaladi. कालड़ी। Kaladi. कालड़ी। Kal means leg, lotus feet. Adi means feet. That is the meaning of that place. So काला means भगवान, अड़ी। Kaladi. कालड़ी। Yes. That is his birthplace, Adi Shankara. तो आदि शंकराचार्य का birth। Mother continues there. तो माँ वहीं पे रहते। And he was traveling and preaching in north. और वो केवल Himalayans. उत्तर हिमालय में ही प्रचार करते हैं। Their final days comes. लेकिन जब माँ का आखिरी समय आया। But he spiritually powerfully understood mother's law, final days. तो आध्यात्मिक दृष्टि से पावरफुल थे, शक्तिमान थे। He just told all his disciples, please wait, I'll come back. He came through sky. और आदि शंकराचार्य ने उनके शिष्यों को बोल के वो आकाश मार्ग से केरला आए। Reached the mother. और अपने माँ के पास पहुंचे। He fulfilled the first promise. तो उनके माँ का जो पहला वचन था उन्होंने पूरा। Then mother was lying and he was comforting. She was very happy. Saw you. तो माँ जब शैया पे लेटी हुई थी तो उस समय आदि शंकराचार्य उनको सांत्वना दे रहे। Then he told, now show me the perfect way and liberate me. और माँ बोली कि अभी मुझे ज्ञान देके मुझे मोक्ष प्राप्ति करना है। Then Adi Shankara Mayavada, no?
He talked about duality, he talked about Brahma Jyoti, he talked about all these things. Great funda he was talking. बहुत बड़ी बड़ी तत्व ज्ञान की बातें वो अपनी माँ के सामने कर रहे थे। Brahma Jyoti, duality, and ब्रह्म ज्योति, द्वैतवाद, all these things, and Ekatvam, and everything, every philosophies, Maya of the philosophy. जो बहुत एकदम तत्व ज्ञान बड़ा कठिन तत्व ज्ञान है वो अपने माँ। Then mother told, I am a simple lady, why are caressing me with all these things? उनकी माँ बोली कि अरे बहुत साधारण सी बेटी होकर ये सब मुझे समझ नहीं आएगा। And then okay, I'll talk something else. Then he talked about all Shiva Tattva and all this Rudra Gitra and all those things. उसके बाद शंकराचार्य शिव तत्व, रुद्र तत्व के सबके बारे में बताने लगे। And all Bhuta Ganas, Pisas, they all came. फिर उसके बाद सारे वहाँ पे भूत गण, पिशाच सब लोग आ रहे। He told, what are you doing? So much things are coming. Please do something which is peaceful to me. And which is soothing to me, you tell something. Then finally he was singing that Krishnastami. He invited Lord and everything comes. Please come and give darshan. That like Govinda Adipusam like that. That all 8 Ashtam final word is please who are sitting with Lakshmi and Garuda, please come and give me the darshan. Like that he ends. तो तब आदि शंकराचार्य ने कृष्णाष्टकम बोला और उसके हरे कृष्णाष्टकम के लास्ट श्लोका में है कि लक्ष्मी जी के साथ जो भगवान विष्णु करोड़े जी पे बैठे हुए हैं वो आके यहाँ पे दर्शन। And a nice song you can see, check it Krishnastakam. And then so there are 2 versions they are telling only that Achyudam Kesavam Ram. That song also they call Krishnastakam. One of the song they took, which is right, I don't know. Then Lord comes and take his mother and take back to Vaikuntha. So आप लोग भी कृष्णाष्टकम चेक कर सकते हैं। दो वर्षन अच्युतम केशवम करके जो सही है। फिर उसके बाद भगवान विष्णु आते हैं और उनकी माँ को लेके बैक टू बताते हैं। Therefore, Brahma Jyoti could not deliver his mother. ब्रह्म ज्योति उनको मोक्ष प्रदान नहीं कर पाई माँ को। His own philosophy. खुद का तत्व ज्ञान नहीं कर पाया। And all Shiva Tattva, Shiva the things could not bring today Shivaratri. कोई भी शिव तत्व वो कर नहीं पाया ऐसा कोई शिवरात्रि है। But Vishnu Tattva, finally Vishnu words, that name took her mother back. लेकिन आखिर में जाके विष्णु भगवान का जो नाम है वो आखिरकार वो काम कर पाया। But they tell even today, Kasi Shiva liberates the soul. It tells. हाँ तो आज भी वो लोग बोलते हैं कि जो शिव जी है वो आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है। But he tells in the ears of the soul, Narayana Nama liberates. तो शिव जी कैसे लिबरेट मोक्ष प्रदान करते हैं? वो व्यक्ति जो जीवात्मा है उसके कान में वो नारायण का नाम लेते हैं और तब जाके वो जीवात्मा। Therefore, that is the only Nama that can liberate. तो इससे पता चलता है कि केवल नाम ही जो हमें मोक्ष प्रदान करता है। Anyway, Nam is so powerful. नाम जो है बहुत शक्तिशाली। One is knowledge, jnana. केवल ज्ञान जो है। But you, by experience, Vijnana, you can experience it. तो उसके बाद जब हम उसका अनुभव लेते हैं तब वो विज्ञान है। Please try let us. Hare Krishna. No question. Some questions. Questions. Yes, Prabhu. Thank you very much. Welcome to the wonderful scientific class. I just want to ask one thing. That one thing like people nowadays like scientific might be difficult to appreciate at simple time. I was asking regarding the temple of Vedic Dragon, which is going to open in our mind. So if you can elaborate something, because you are to hear from this, who else can explain us better? हरे कृष्ण। सो मदर इलेक्ट्रो ने प्रश्न पूछा है कि जो अपना वैज्ञानिक दिमाग है तो उसके ऊपर सारे वैसे रहते हैं। प्रभु जी अभी बचत हम ये कर रहे हैं, प्रभु जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मायापुर में टेम्पल ऑफ वेदिक साइंटिफिक बन रहा है इसके बारे में प्रभु जी कुछ बताएं।
About TOP. TOB. Yes, yes. But it's a Vedic planetarium. They have a planetarium also. तो TOB में जो अपना यूनिवर्स है ब्रह्मांड है उसका एक जगह पे उन्होंने प्रतिकृति बनाई. But now in material planetariums are many. In Bangalore, many places the planetarium is there. You go inside planetarium, they will simulate all the Prabhanja. So solar system, everything. तो भौतिक दृष्टि से जिस ब्रह्मांड को या सोलर सिस्टम को हम चाहते हैं बहुत सारी जगह से टाइम होते हैं. लेकिन मायापुर में जो बन रहा है वो वैदिक तरीके से वैदिक पद्धति. Vedic, what according to Bhagavatam. भागवतम के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड कैसा है उसकी प्रतिकृति मायापुर. Actually, according to Bhagavatam, there is only one sun. तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक ही सूर्य है. But according to modern astronomy, every solar system there are many suns. लेकिन भौतिक जो विज्ञान है उसके हिसाब से अलग-अलग जो छोटे-छोटे ग्रहों का समूह है उसमें हर एक में अपना-अपना एक सूरज है. And now whatever you see in the sky, according to modern science, which are not flickering, that is planets. They are nearby. What are flickering is they are calling suns. They are calling light years. The distance they calculate light year. Light year means the distance is calculated by light year. In 1 second, the light can travel 3 lakh 16 something kilometers. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि भौतिक विज्ञान की दृष्टि से हम आकाश में देखते हैं तो टिमटिमाते जो है वो तारे हैं बोलते हैं उसे भौतिक दृष्टि से जो सारे सूरज का काम कर रहे हैं और जो टिमटिमाते नहीं वो सारे ग्रह हैं और वो बहुत सारे लाइट ईयर दूर है प्रकाश वर्ष दूर है. एक प्रकाश वर्ष माने एक सेकंड में जो प्रकाश है कितना डिस्टेंस कवर करता है. More than 3 lakh kilometers. तो वो 3 लाख किलोमीटर In such a speed, 1 year if it travels, 1 second this much, then 1 minute means 60 multiplied. 1 hour means 3,600 times multiplied by 3 lakh. And 1 day means 24, another 24. And 1 year means such a distance they are there. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि ये जो तारे लोग बोलते हैं उसको अगर देखा जाए तो बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष माने एक सेकंड में 3,60,000 किलोमीटर है. But these are all modern astronomy, but some truth are there. Therefore, the planetarium is constructed so that our Vedic person will be truthful. तो ऐसा भौतिक दृष्टि से बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमारे जो मायापुर का है वैदिक दृष्टि से कैसा है उस हिसाब से उसको बनाया. Therefore, they are working on it. Some lot of details are going on. तो उसके It may take another 10 years, 15 years to finalize because it's a very tough subject. तो उसको बनने के लिए और 10-15 साल लगे. बहुत कठिन विषय है. Yes, because to convince the modern mind. तो हमारे जो भौतिक मॉडर्न मन है उसको कन्विंस करने के लिए उसको टाइम लगेगा. Prabhupada wanted the modern scientists to accept Krishna consciousness. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग हैं उनको कृष्ण भक्ति को देखना चाहिए. That's why he started Bhakti Vedanta Institute, BA. इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट चलाया. That way we are doing this. More details you can see in website than I'm telling you. उसकी वेबसाइट पे जाके आप और ज्यादा. Thank you. Any other question? I have two questions. First question is regarding so generally I have seen scientists kind of background because they are very they don't like to Listen others. and they have their own philosophy and they have their own philosophy. So how In spiritually also, every Muni means everybody will independent thinking. how do you get convinced? Because sometimes there's a scientific background because this I don't believe this. But then I was thinking, how can you put it? So this kind of logic could follow. So how do you get convinced that Krishna is important? It's a special mercy.
of Vaishnava and Prabhupada. It cannot be by our own effort, we cannot understand, by the mercy. And also that whatever comes, whatever here, that should be accepted only when Paramatma helps us. And how did you feel? You take your case. How did you come to this answer? And lakhs of people are crores are in the outside world. Why did you choose to come to Krishna? Because somebody helped you. Externally, somebody helped, internally, Paramatma helped. And we got a right mood, right time, it came. That's it. गुरुजी ने प्रश्न पूछा है गुरुजी जो वैज्ञानिक लोग हैं अलग अलग का एक थिंकिंग प्रोसेस रहता है तो आप किस से जुड़े गुरुजी बोल रहे हैं कि ये कृपा से हुआ है भक्तों के श्रद्धा करके कृपा से हुआ है करके और गुरुजी बोल रहे हैं कि अंदर से परमात्मा भी हम लोगों को प्रेरणा देते हैं तो बाहर से भक्त मदद करते हैं और अंदर से परमात्मा मदद करते हैं और एक सही वक्त पे सही जगह पे सही डिसीजन जब लिया जाता है तो हम कार्य करते हैं Second question. Since more than 35 years, you are so for this my hobby, how can you give guidance for the yogi so to be Krishna of course. Simple guidance is chant never be left. Whether you like it or not like it, and most of them are take casual chanting. First, they don't chant proper. 16 rounds, many they don't chant. And even they chant, they don't chant quality rounds. Quality rounds is very important. Because chanting gives benefit. But if the rounds are not quality, that doesn't give the full benefit. Quality rounds means without any deviation, with all senses involved, and mind also involved, you should chant. That's the first instruction. Sometimes situation may not able to do, but choose the time and situation such that you can do at the maximum. At least 8 rounds or 10 rounds you should do properly. Chanting. Second is very carefully avoid offenses. Even if you don't progress, you will not lose what you have it. And the offenses not necessarily by word, it can be by mind also. Even by mind you cannot do offenses. That will disturb your chanting. Your whole mental freedom will go. This will dominate your mind. These are the two few points which you can adopt. And how can you avoid offenses? Become a very humble servant. And how can you avoid offense? Think all your nonsense. Don't think others' nonsense. Your nonsense you think. Then you will become humble. And others' good quality you think of it. That way you will be very happy. Vaishnava will be very happy when other Vaishnavas are glorified. Only a Vaishnava is happy when he is glorified. And you know, Sanatana Goswami used to tell, when Mahaprabhu was, you know that, what is that, Jagadananda Pandit. He was talking to Mahaprabhu that he told Sanatana Goswami was telling Mahaprabhu is daily hugging me. And he went to Jagannath Puri, I'm feeling shame. My body is full of wounds and other things. Then he told, your job is over, you go back to Vrindavan. Then when Sanatana Goswami, next day also he came and hugged Sanatana Goswami. Then Sanatana Goswami was very upset. What Jagannath Pandit is told, true, I will go today to Vrindavan. Then who? Prabhu shouts at Jagannath Pandit. Who is he? He's smart boy, you are such a senior things like that. He shouts and tells him, how can he shout to you like this and that?
Then Jagadana Pandit, after hearing that Mahaprabhu said, sorry, Sanatana Goswami is crying, oh, Jagadana Pandit is so much fortunate, and he gets lot of shouting of you. I'm so unfortunate, I'm getting so much glorification. Sanatana Goswami is very depressed. You are glorifying me, I am fallen soul. Because you are getting low. That means your devotee never wants to be glorified. But same mode, we read all these things, but it should go to our heart. And we should not expect any such affected by things. And when you are being shouted, now how many are ready to be accepting somebody criticizes or somebody gives corrections? We don't accept. You should learn to take the things. Anybody's corrections, anybody thinks you should take it. And the same thing, you should be ready to accept all their good services. Then your life will be smooth. These are the few of my personal experience. That way you can continue the devotion service peacefully. Hare Krishna. रोज 30-35 साल से वो इन आगे बढ़ने के लिए अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हम में से सुलह मना करते नहीं है, और जो करते भी है तो भी क्वालिटी वाले नहीं। हम लोगों को क्वालिटी वाले राउंड्स करने चाहिए। और दूसरा चीज है, हम लोगों को ऋणादपि सुनिश्चित बन के रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। तो कभी भी दूसरों से कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं लेनी चाहिए, उसको का अच्छा देखना चाहिए। वैष्णव अपराध वैष्णव का कभी फॉल्ट नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। हमारा मन जो है मन में भी नहीं करना चाहिए। हमारा मन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो I'll later because others will give chance. Yes. we'll ask questions using the translator. So, Prabhuji, whenever first we come into devotionals, we have a lot of enthusiasm. We do like japa also, we do very nicely. We attend all the programs, all the sessions, and everything. And slowly, as we grow, like 10 years, 12 years, somehow or other, although it's not in our heart, like I'm senior or something, but our that attitude of doing services, performing something like enthusiasm goes so down that we are accustomed to have a certain schedule. This is what my service is, this is not my service, or this is what my schedule is. I will not extend my. So the first day when we came, that attitude it slowly diminishes so much that practically we go into inactive phase devotional service within 10 years, 15 years, 20 years. It's a standard problem for everybody. And the main thing is when we came, you are very innocent. You are very humble. You wanted only devotion in a very humble mode. But later, slowly you think you are great. And therefore, you think you are giving others, you are not taking from others. And that type of mood makes you feel more on the things. And the service, when you are taking restricted service, it is hobby. Hobby means what you like, you take it. It is not service, it is hobby. It is therefore many of us tries to take what I like. But service means what Lord wants, you should do it. You may not like it, but Lord wants, Vaishnava wants you. That is service. Other is our hobby. Therefore, these are the few points. And another is in this whole process, just I explained, some aparadha also will cause us to lose the taste. And if we keep perfectly your mind serving mode and without choice, whatever comes on its own, do the service, what is needed for society, what senior Vaishnavas are telling. Even junior Vaishnavas tell also you can do. Then your life will be very peaceful. Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, you emphasized a lot of the point of
the radio frequency that Lord sends us messages all the time, but we don't receive it. So, although you emphasized it quite a bit, but I was not, I would like to know this, like, how we know that the Lord is sending messages, what is right and what is wrong, and our mind is not making us act what is right. Simple example. How do we differentiate? For example, Lord is sending message. You tell the question quickly. So अभिषेक प्रभु ने प्रश्न पूछा है कि प्रभु जी ने जैसे ट्रांसमीटर रेडियो स्टेशन वगैरह के बारे में स्पष्टीकरण दिया है, तो वैसे भगवान हमें ऑलरेडी संदेश भेजते हैं, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि ये संदेश जो है ये भगवान से आया है और ना कि मेरा मन बोल रहा है ये सब चीजें, तो इन दो चीजों को कैसे हम अलग-अलग देख सकते हैं? Lord is giving instruction, we are not taking. I'll tell example. Conscience prick. Conscience prick, manachachi. When you do something wrong, your mind is telling conscience prick, you do wrong. The conscience prick, they call English, I don't know how will you translate in Hindi. Conscience prick. That in conscience means manachachi, they tell chakshi. The mind become the things and it disturbs you. Oh, don't do it, don't do it. But still we are doing. The conscience prick is coming from Paramatma. But the Jivatma is overruling that and is not listening. For example, I do some nonsense. I get my conscience is pricking. Pricking means you know what you tell? Pricking means what it yes. My conscience is not good, don't do it. But still I am doing. That is Paramatma is telling, don't do it. But the Jivatma is telling, overruling that doing. Then that is called Paramatma instruction, one example. And if you are advanced, you can see many instructions are coming. That is called tuning. You need to tune finely. How to tune? The chanting should be pakka, perfect. Your mind should not be offended. And that there is a term, they call it in communication, noise. When channel is transmitted, that noise will come. That noise should be removed. The technical word also noise. They use. Therefore, when Lord is sending communication, lot of material desires are noise. That material desires noise is covered in this without the proper coming. And even if it comes like conscience free, our bluntly barking, you don't accept it. Therefore, with this, all those things makes us think, but Lord is very sincerely guiding us, sending us instruction. It is our duty. प्रभु जी ने स्पष्टीकरण किया है कि गलत करने जाते हैं तो हमारे अंदर से ऐसा एक आता है कि नहीं ये मत कर, ये गलत है। वो जो संदेश है वो भगवान के साइड का है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको ओवररूल कर देते हैं, उसके ऊपर जाके हमें जो अपने मन से करना है वो करते हैं। तो हम लोगों को अपना वो जो फ्रीक्वेंसी है भगवान के साथ फाइन ट्यून करना चाहिए, ताकि ये जो बाकी के नॉइज शोर शराबा आता है से वो नहीं सुनना चाहिए मन की इंस्ट्रक्शन। And I request all of you should tell these points, scientific points, everybody will accept. Because we are not sentimental people. We are scientific people. मुझे बोल रहे हैं ये पॉइंट्स जो है हम अगर साइंटिफिक वैज्ञानिक सबको बताते हैं तो सब लोग इसको स्वीकार करेंगे। सेंटिमेंटल भावुक लोग नहीं, और ये प्रोसेस हम लोग भी वैज्ञानिक दृष्टि से। Thank you. I pray Jagannath Badeshwara to bless all of you. Hare Krishna.